further, how many of us have done yesterday's process? Writing about 3 people who have made some change in our life. I'm sure there would be more if we sit down. हम humans की tendency क्या होती है? भूल जाते हैं. किसी ने करा, हाँ मैंने करा तो मुझे याद रहता है. मैंने ना उसके साथ ये किया था, मैंने उसके साथ वो किया था. I am this kind of a person. We remember all that. But this is a very beautiful process, very powerful. What would happen if I have done it? You will feel that intense gratitude in us. As I told you, when you feel that intense gratitude, your heart chakra यहाँ पर आपको बहुत बड़ा खुला खुला लगता है. You feel कि आपका aura भी, यदि जो लोग aura समझते हैं, आपको लगेगा आपको aura बहुत expand हो गया है, आप बहुत फैल गए हो. You are very powerful. ऐसा लगता है. और उस फीलिंग में माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी चीज है. जब भी आपका ऑरा खुले या आपका मन बहुत खुशी से, अब वो खुशी तो अपन सबको समझ में आती है. ऑरा चाहे आए चाहे चक्रास आए ना आए, कोई बात नहीं है. हम सबको ये तो समझ आता है यार मेरा दिल बहुत बाग बाग हो रहा है. उस दिल में उस वक्त यदि हमारी कोई विश हमने मांग ली, परफेक्ट टाइमिंग है वो. जब when you are in that vibration, when you're very happy and you remember to ask, that is the time when you're vibrating really high, and you will choose and you select and you get it for sure. Remember friends, just few days back I was telling you when we were doing that money exercise. What was that money exercise? याद है किसी को sentence? Anybody remembers that sentence? Hey bhai dekho raat gayi baat gayi mat karna please. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Wonderful Umesh sir, wonderful. You get today, आज के test में you get full marks. Thank you miss. आपने कान पकड़ पकड़ के सिखाया है तो जहन में घुस गया है सारा चीज. Beautiful, beautiful sir, so nice. अब देखिए, thank you for all the money I have been given. ये वाले जो करी थी हमने, कैसा फील हुआ था आपको? तब है ना, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी. मेरा ये वो पेपर है जहां मैंने लिख रखा है थैंक यू फॉर ऑल द मनी. इसके बाजू भी आपको नजर आ रहा होगा एक अमाउंट है. कुछ नजर आ रहा है उमेश सर, आपको पढ़ने में आ रहा है? 5 lakh. 5 lakh, yes. 5 lakh. And I'm very close to that. मैंने ये डाला था यूनिवर्स में. अब देखिए उसमें ये है कि चाहे वो किटी निकली हो चाहे कुछ ही निकला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. So why am I telling you कि मेरे पास पैसे ना? I'm telling you whenever we ask anything, it might take little time, but then when you ask a realistic thing and give that time, it happens. How? Suppose मैं बैठ जाऊं, यार ये मेरे पास कैसे आएंगे? I don't earn so much money in 1 month. Doesn't matter. मेरी 2 किटी ने निकाल के दे दिया फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अमाउंट, एक्स अमाउंट, राइट? सो वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल ऑफ हाउ, जस्ट आस्क. आज की जो अपनी प्रैक्टिस है ना माय डियर, आपको याद होगा ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट, तो मैंने आपसे कहा था 2 लिस्ट बनानी है. एक तो वो लिस्ट बनानी कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, कौन सी मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा है. नहीं बनाई है तो फिर बना लेना. क्यों बनाइएगा? क्योंकि जब आपको पता है ना, जैसे वो क्या कहते हैं कि आपने अपने किसी बंदे को कोई गिफ्ट दी, तो उसने उसको बड़े संभाल के जतन के साथ, फॉर एग्जाम्पल कोई शो पीस दिया आपने मुझे कि मैम मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, और वही शो पीस आप थोड़े दिन बाद देखते हो कि मेरे घर के बाहर सड़ रहा है, मैंने मेरी काम वाली को दे दिया. हाउ वुड योर फीलिंग बी? एनीबॉडी? कैसा लगेगा? बहुत दुख होगा. दुख होगा. नेक्स्ट टाइम आपका मन होगा कि मुझे कुछ लाके देने को? उनको पसंद नहीं आता है यार. आपका मन होगा मेरे लिए कुछ लाने के लिए? नहीं मिस, नहीं होगा. सेम चीज यूनिवर्स में नहीं चलेगी क्या? तो यूनिवर्स कहेगा जिसको चाहिए उसको क्यों ना दूं?
जो मांग रहा है उसको क्यों ना दूं, जिसको चाहिए ही नहीं, उसने मांगा ही नहीं, तो उसको क्या क्यों दूं मैं, isn't it? तो जब आपको जो दिया है उसको ऑलरेडी यू आर अप्रिशिएटिंग फॉर, जैसे किसी ने आपके लिए कुछ, आप किसी के यहाँ खाने पे गए हो और उन्होंने आपके लिए बेशक 2 चीज बनाई है एंड यू आर ऑल गागा अबाउट इट, क्या खाना बनाया है, इतने प्यार से उन्होंने आपको खिलाया, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना, आई एम श्योर दैट पर्सन वुड टेक extra efforts to make something for you. Why? Because you know how to appreciate that. Same goes with our universe, dear friends. When we write that count your blessings, वो इसलिए नहीं बोलते कि बुक बोल रहा है, उसके लिए एक बेस है, क्यों करना है आपको वो। तो जब आप अप्रिशिएट करते हो, कितनी सारी चीजें, 100+ चीजें लिख रहे हैं लोग, बहुत सारे, तो आप बैठिए और आप देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, और आप रियलाइज करेंगे कितनी अच्छी चीजें मेरे पास। तो आपको क्या लगता है, यूनिवर्स और ज्यादा ना देगा? देगा, फॉर श्योर, फॉर श्योर। तो अभी भी नहीं लिखा है ना, तो लिख लेना कि आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा है। काउंट योर ब्लेसिंग्स। भूषण जी, आप थोड़ा म्यूट पे कर दीजिए प्लीज, भूषण जी, थैंक यू। तो अब आप लोगों ने, किसी ने नहीं लिखा है तो आप प्लीज लिख लीजिए। आप देखेंगे, आप अभी, अपन लोगों की टेंडेंसी होती है ना, कोई एक चीज नहीं हो रही होती तो हम वी वरी सो मच, ना मेरा ये अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा वो अच्छा नहीं हो रहा है। जब अपन उसको लिख लेते हैं ना, और जब हम लिख लेते हैं ना, कर दिया जाए। मैम आप उनको म्यूट कर सकते हैं। हाँ, आप पूछ रहे ना। मैं करता हूँ, म्यूट करता हूँ एक मिनट, आई विल म्यूट। यस सर, प्लीज, मेरा नहीं हो रहा। हरे किशन जी, आ जाए, हरे हरे किशन जी, किशन अच्छा, जी, हरे किशन हाँ जी। हाँ, एक सेकंड। तो Done, माय done. डियर फ्रेंड्स, आप नहीं लिखा है तो लिखिएगा। When you will write, you will know, my God, I've got such beautiful things in my life. ऐसे ही एक और लिस्ट है जिसके बगैर आज की प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती। हरीश सर, आप, हाँ, थैंक यू सर। एक जो और लिस्ट थी आपकी, all your wishes, what do we want from this life, what do we want from this universe। एक एक्टिविटी करते हैं, आप सब लोग आंखें बंद कर लीजिए और आप इमेजिन करिए कि भगवान जी आपके दरवाजे पे आए हैं। बेटा मांग लो, कितना मांगना है, अव्वल तो वो फिगर सोचो क्या मांगना है, और उस फिगर का क्या करोगे। उसके साथ कंडीशन भगवान जी ने ये लगाई है कि जो भी फिगर मांगोगे आप, और आपने कहा मुझे कि ये इसके लिए चाहिए, तो यदि आपको पता है किस लिए चाहिए तो मैं आपको हर महीने ये अमाउंट दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, भगवान ने कहा तथास्तु। अब आपके पास 10 लाख आ गए, आप देखिए कबर्ड में रखने के लिए पैसे रखेंगे तो बढ़ेंगे कभी भी नहीं, ये रूल है। आपको किस लिए चाहिए वो आप सोचिए और वो जरूर आएगा। ठीक है साहब, अब आपको 10 लाख भगवान जी दे रहे हैं, सोच के रखिए क्या करेंगे। फिर अब दूसरे बार सोचिए, अगले महीने में 1 तारीख को भगवान जी 30 को ही आ जाएंगे, लो भाई आपके 10 लाख और आ गए, कहाँ खर्च करोगे पहले ये बताओ। दूसरे महीने में भी आए, तीसरे, सोच के बताना भाई, देखो अपने साथ चीटिंग नहीं करना, क्योंकि वो यूनिवर्स को पता है आप क्या कर रहे हो, राइट। तो अब सोचो, अब बताओ, टेक योर टाइम, 2 more minutes। सोच लिया? बताना नहीं है आपको, मेरे को, आपको सोचना है। सोच लिया? यस, ठीक है। अब आपने इस महीने का सोच लिया, अगले महीने का सोच लिया, दूसरे महीने का सोच लिया, उसके आगे क्या सोचा है क्या, और आपको आंसर मिल गया क्या, कहाँ खर्च करना है। हाँ मिस। और ये आपको हर महीने मिलेगा, हाँ, विदाउट फेल। तब तक मिलेगा जब तक आपको, जिस दिन बंद हो जाएगा, जिस दिन आपको नहीं पता मुझे स्पेसिफिक क्या करना है। माय डियर फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों को दूसरे महीने के बाद पता ही नहीं क्या करूंगा मैं, किस चीज के लिए मुझे चाहिए। दैट एक्टिविटी इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी, बट इट इज इंट्रोस्पेक्ट, कि मुझे चाहिए क्या चाहिए मुझे। सो रिमेंबर, इनिशियली वी हैड रिटन वन लिस्ट ऑफ विशेस। तो जो विशेस हमने लिखी है
तो ही वो पूरी। मुझे पता ही नहीं है मुझे वो 10 लाख कहाँ डालना है। एक बार मिल जाएंगे, दूसरी बार मिल जाएंगे, तीसरी बार तो मैं इधर उधर झांक रही हूँ, कहाँ करूं मैं, कहाँ करूं, मेरे बंद हो गया माल। So in the same way, dear friends, what do we want in our life? क्या विश है मेरी? So आपको याद होगा तो डे 1 में हम लोगों ने आपसे कहा आप जितनी भी विशेष चाहें रख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, बट उसका एक तरीका है। राइट शॉर्ट सेंटेंसेस सो दैट यू योरसेल्फ आर नॉट कंफ्यूज्ड कि हमें क्या चाहिए। सेकेंडली, राइट इन प्रेजेंट टेंस। So write in present tense. Right? I am a powerful soul. I attract money from many sources. I am a successful remedial educator. You can write as many things as you want. I have a big bungalow. और आई हैव अ बंगलो और आई हैव अ बिग बंगलो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कैसा? किसी के लिए बिग 2 रूम का है, किसी के लिए बिग 1 रूम का भी है, किसी के लिए बिग 5 रूम्स का भी है। किसी के पास घर नहीं है तो वो बोलते हैं मुझे एक कमरा भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। एक कमरे वाले को लगता है मुझे 3 कमरे। तो आपको क्या चाहिए? बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी स्पेसिफिक। आई वॉन्ट, जैसे आप चाहते हैं, वांट नहीं लिखना कभी भी, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहा है या उसको वहां भेजना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे आप? कैन एनीबडी हेल्प मी विद दिस सेंटेंस सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट द पर्पस इज My नॉट child टू is studying. My child is studying in this particular university. Name of university. Okay, so my child is in Harvard University. My child Okay. is learning super courses in one of the magnificent university. ये बहुत जनरल है। देखिए, वन ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपने कहा आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी अ डॉक्टर, राइट? अब वो डॉक्टर गधे घोड़े का भी, क्योंकि सी आई एम टेकिंग अ वेरी रॉ लैंग्वेज, गधे घोड़े का है नहीं, यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ डॉक्टर। वो डॉक्टर एक MBBS भी है, वो डॉक्टर एक कार्डियोलॉजिस्ट भी है, और एक वो बड़ा साइंटिस्ट भी है। अब देखिए, जो एक MBBS डॉक्टर होगा उसकी दुकान में, उसके डिस्पेंसरी में, उसके क्लिनिक में बहुत भीड़ होगी, बट उसके पास पैसा बहुत नहीं होगा। ये कार्डियोलॉजिस्ट होगा, एक स्पेशलिस्ट होगा, उसके पास पेशेंट भी कम होंगे, पैसे भी ज्यादा होंगे। अब आपको किस तरह का डॉक्टर बनाना है? आप ऐसे बिल्कुल मत लिखिएगा आई एम सो थैंकफुल टू यू माय डियर फॉर दिस एग्जांपल, बिकॉज ऑफ यू अदर्स विल गेट एन आइडिया। देखिए, यदि मैंने कहा वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, तो किसी के लिए जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, उसके लिए उसके बच्चे को उदयपुर के IMS में या एक दूसरे किसी भी यूनिवर्सिटी में MBA कराना बहुत इजी है, तो उसके लिए वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। किसी को IIM के में जाना है, वो उसके लिए अच्छी है। किसी को तो इंडिया के बाहर ही जाना है। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, व्हाट डू आई वांट। एंड इफ आई एम नॉट आस्किंग, बिलीव मी डियर, जैसे एक वो कॉमन सा मैं हर बार एग्जांपल देती हूँ, जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ उसको दूध की बोतल नहीं देती है। ऐसे ही आप यूनिवर्स से नहीं मांगेंगे तो आपकी कौन सी विशेस और कैसी पूरी होंगी, राइट? तो जिसने भी अपनी विशेस लिखी है उसका एडवांटेज है आज, क्योंकि ये वाली लिस्ट आपको बार बार काम आएगी। जिन्होंने नहीं लिखी है, ensure that you write today. आपको यदि कुछ भी ट्रबल है, कुछ भी चैलेंज है, to write that, you can always contact us. We'll help you. ठीक है, dear friends. Let me share the screen today. Okay. You see, all of you can see a picture here. इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? इस पिक्चर में मेरे को पॉकेट में से मेरे पास ये लिस्ट है। तो ये लिस्ट तभी आपका ये जो टाइटल है आज का, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू,
When you will know all your wishes, then only I'll be able to make them true, right? वरना तो क्या होगा, जो बाजू वाला कर रहा है, जैसे पहले अभी तो बच्चे बहुत स्पेसिफिक है, उनको पता है क्या करना है, वरना पहले के बच्चे हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने भी बहुत बार करा होगा ऐसा, मेरा फ्रेंड MBBS कर रहा है तो मुझे भी करना है, मेरा फ्रेंड CA कर रहा है तो मुझे भी करना है, right? So if you want all your wishes to come true, just look at this. This is the list, which is very important. And as I always tell you, मेरा परसेप्शन इस पिक्चर का ये होता है कि आपको जब भी आप ग्रैटिट्यूड करोगे, आपको ये जादू नजर आएगा, नहीं करेंगे तो यहाँ पर अंधेरा है. So it is only visible to those who do it. For others, it could be anything. Right, my dear ones? Chale, let's start. Yes, Binalji. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent PL, Why do you feel so, Binalji? Do you think it's a correct statement, or what is your opinion about it? Imagination is the true magic carpet. What do you feel about it? Yes, ma'am. Anything. We all have very different opinions, and it is fine. Yes, ma'am. It is a true magic carpet. I agree on it. Because एक negative situation आ जाता है and we dwell upon it and negative वो बढ़ते जाता है. So same things with a positive also. Okay. So how would the imagination help you? How this imagination would help you? And how is it a true carpet? Anybody else would like to answer this question? Try, no, dear friends. कोई marks थोड़ा ना काट रही हूँ मैं किसी के. Right. Anything can be. Imagination से हम कुछ भी imagine कर सकते हैं. So because of that, so everything is possible. So it's like magic. It's not magic. It's like I can imagine anything. Yes. And then it can come true. Yeah. So it's like a magic. That's why imagination is a magic carpet. Yes. Very true. Very true. So my dear friends, when we talk of imagination, this imagination, you can imagine anything and everything under the sky, isn't it? So when I know how to imagine, जैसे क्यों दी गया आपको imagination? आपको भी पता है, visualization के बगैर कोई भी चीज हम कर नहीं सकते. हमको क्या visualize करनी होती है? As if it is done. For example, if I want to buy a big car, if I want to buy any car, for example, Audi, now I have to imagine that I already have an Audi. अब यदि आप उसमें फंस गए, अरे यार मेरे पास Audi कैसे आएगी? I'm fooling myself. Here you are fooling yourself by doubting. So imagination is the true magic carpet. Like this carpet would take you anywhere in the world, anywhere in the universe. It is that magic carpet, like you can travel to whatever you want in your life. Right, my dear friends? Therefore, it is a true magic carpet. That means I should know how to imagine, first of all. Yes, dear. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Dear friends, if you remember in the beginning also, we were talking to you that the first 12 practices are just to learn to be grateful for what we have, what we already have in our lives. And now onwards, from 13th onwards, we are learning how to, how to get it more, how to practice and get those things in our life which we really want. So this is the first practice in that line. So by now, like up till now, you have written 120 blessings, and you know now how to look at your
positives, how to get into that positive mindset, how to So- be great, be in gratitude. પૂરી તો ત્યાંથી જ મળે છે ને. भावना जी का अरे। भावना जी म्यूट कर दीजिए आप प्लीज. Okay, thank you. मैंने कर दिया है. हाँ sir, thank you sir, thank you so much. So now by now you know how to do it. Sort of a foundation is built, and now you know how to receive, how to get it in your life. And from now onwards, you would try to get it in how new things you would get in your life. Yes, dear. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they have before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could give thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in a river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for the food before they hunt for it. And the very nature of the prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. Very simple. Very simple. It is something not new we are talking about. As I always tell you, Rhonda has just simplified everything which was already existing. It was just that we did not know इस सीधे इसको सीधे सीधे रास्ते पर कैसे ले जाएं, अपनी इस normal life में इसको कैसे imbibe करें. So we are so grateful to her for making it, giving it and making it simplified, so that we can take it from her and do it in our life. Now, so this gratitude is from very long time, and not only in India, all over the world. See, everybody has been following it before they did anything. That means before you get whatever you are desire, what is your desire, you have to believe, imagine, visualize it is done, and be happy about it. सिर्फ बोलना नहीं है आपको. जैसे for example, आपका wish है to be first in class. अब exam भी नहीं हुआ है, साल ही नहीं खत्म हुआ है, but you have to visualize कि मैं फर्स्ट हो गया हूँ, I'm dancing, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे हैं, मुझे सब लोग ऐसे बधाई दे रहे हैं, मैं सबको ऐसे मिठाई खिला रहा हूँ. All these things you have to imagine. Yes, dear. The law of attraction says like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive it, what you want, you have now discovered another of its magical powers. The My dear very friend, one second, Bina. yes, My dear friends, आप देखिए कितना बड़ा खजाना मिला हमको आज. कैसा? अब तक तो हम काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हैं 10 रोज. किसके लिए लिखते हैं? जो अच्छी चीजें हो गई हमारी लाइफ में, राइट? हम वही लिखते हैं एवरी डे. अब हमारे को उन्होंने क्या कहा है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट वॉट एवर इज डन यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट. You can be grateful for what you want and it has not happened, but be grateful and then उसका रास्ता बना दो, pave the way so that that thing happens. वही वाली बात है. मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी ऑफिस 5वें फ्लोर पे हो, इतनी बड़ी ऑफिस हो, इतने लोग हैं और मेरा कैबिन कितना अच्छा है, जो भी है, all the details. When I am able to imagine that, not only imagine, जब आपको वो मिल जाएगी, how happy would you be? That same feeling has to come. Again, I tell you, let me tell you, dear friends, हम अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते, हम यूनिवर्स को बेवकूफ नहीं बना सकते. So we have to be very true to ourselves कि what am I doing? But it is very simple.
If we do it, treasure है, खुला है खजाना. Yes, dear. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. As I always tell you, इसको कहीं पर engrave कर दीजिए, जगह जगह लिख दीजिए. It will help you. मैं इसको बहुत सारी जगहों पे लिख के रखी हूँ. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. So whoever will not do it, ये बिल्कुल धमकी नहीं है, ये एक fact of life है. Right? So please do it. Yeah. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you can simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. Yes. देखो हो जाने के बाद तो सभी लोग कर लेते हैं. No big deal. No big deal. हमें क्या करना है? We have to be grateful for that with whatever we want to receive in advance. बाद में तो होना ही होना है. फिर तो वो जब हो जाएगा तो वो वैसे भी होगा, ज़्यादा होगा. But we have to do it before also. Yeah. Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it's not your job to figure it out. You don't try to figure it out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? How many of you, when you walk, आपको लगता है कि मैं ऊपर उड़ने तो नहीं लग जाऊंगा? How many of us do that? We all know कि जब मैं धरती पे चल रहा हूं तो मैं चल ही रहूंगा, हवा में नहीं उड़ूंगा मैं. Right, my dear friends? We all know it. So in the same way, I mean, we're sure about it. We don't have to think, okay, how are we not going to stay back? How are we not going to fly? So this trust you have to have when you are going to imagine things. That time, never be in doubt. जहां हम doubt पे आ जाते हैं, हमने अपना रास्ता बंद कर दिया, a big block. Right? So no mental block, no physical block. जैसे for example, अभी अपना ही कभी बच्चा बोलता है, मेरे को तो पेंटिंग करनी है, तो हम उसको बोलते पेंसिल तो पकड़ने आती नहीं है, पेंटिंग कैसे करेगा बच्चा? तो इसमें अपन ने पता है क्या किया? हमने उस बच्चे को डिमोरलाइज, ये वो सब चीजें तो है ही, हमने एक मेंटल ब्लॉक उसके लिए क्रिएट किया है. हमने उसको नेगेटिव एनर्जी दे दी है. जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार ये बहुत this person is he's a very short-tempered person. तो हम जब भी जिससे मिलते हैं हम उसको बोलते पता है he is very short-tempered. या अपन घर में होते हैं, अपना कोई बच्चा उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, हमारे पास जो भी आता है हम उसको बोलते हैं इसको मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है. तो इवेंचुअली क्या होगा? उस बच्चे को और गुस्सा आएगा. Why we are giving those negative vibrations? So just trust whatever you are asking. Just trust whatever you're doing. Right, dear ones? And don't try to figure out how the things would happen. They would happen. Yes. You trust and know that when you're going for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you're grateful for what you want will be magically moved to you, because it is the law of universe. See, this law is, this world, this universe is always governed by law. आपने कभी देखा क्या? आप जिस भी सिटी में रहते हैं तो कभी आपके यहाँ पर did the sun rise from west?
आपकी बिल्ली ने कभी डॉगी के बच्चे को जन्म दिया कि बिल्ली ने बिल्ली को ही जन्म दिया? कभी गलती नहीं हुई ना? So this universe is governed by laws. So when it is governed by laws, we should trust. But we have to remember one thing, that trust किस चीज का करना है कि unless and until I am not grateful, I will not be able to do it. Although it is very simple. आपको gratitude करने के लिए 2 ही मिनट चाहिए. उस 2 मिनट से आपकी लाइफ में abundance, आपकी लाइफ में हेल्थ, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में जॉब सेटिस्फैक्शन, पता नहीं कितनी और चीजें हैं उस 2 मिनट के ग्रेटिट्यूड से होती हैं. करना हमको ही पड़ेगा, nobody else. And then the problem is, हमने करते करते जब छोड़ा, वो अपन वापस स्क्वायर वन पे होते हैं. So that means ये जैसे हम रोज खाना पकाते हैं, रोज खाना खाते हैं, ये भी रोज पकाना है और इसको रोज खाना है, तो ही हमारा काम चलेगा. That is the law of universe. When you are grateful, you know what you will get. Yes, my dear. What do you most want right now? At the Okay. beginning, Yeah, can you? yes. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now it is the time to do it. Go to the list you have created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your lives, such as money, health, home, relationships, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Yes. So when we were writing initially, we had different categories. So we could write as many from each category, as many as you want. So now if that list is ready now, what you have to do, you just have to see which 10 desires you want. You could be having 20, you could be having 40. It's okay. But then because there are some are short term, some are long term. आपको घर बनाना है तो घर cannot be done at the snap of the finger. It will take some time, right? Somebody wants कि मेरा तो एक अच्छा सा बेटा हो, तो वो बेटे को 9 महीना तो चाहिए रहेगा, right or not? So some of our desires are short term, some of our desires are long term. So when you have all your desires, you select any 10, your priority. Where is your priority? And then I would suggest take from the all the categories, choose top 10 desires you really want to change and you want to have in your life. Yes. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from the practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using this law of attraction, that's exactly what you are doing. Everywhere this law of attraction works. As I just now told you, this universe, it works on laws, right? So this law of attraction is always there. So therefore, you have to keep checking yourself, or we have to keep checking ourselves, what kind of thoughts are going on. If my thought is not very good, I have to make an effort to change it. हम लोगों को यहाँ इंडिया में बहुत सारी चीजें आती हैं. हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, और कुछ नहीं तो हम भजन सुनते हैं. I mean, you can do anything. और कुछ नहीं तो एफर्मेशन कर देते हम. 4 एफर्मेशन बोलने के बाद 5वें में आप you are there. So we have got so many tools. So once I am in that, and then I can ask for, and then see, then I am that law of attraction, I have started rolling.
And that is how I will attract all the good in my life. Yeah. Yes, yeah. Yes, Bina, sit down. आवाज भी न करते ना माँ का Soni डा ji. मेरा नाना ले पाड़ो सुचो ने बैठी तो कौन बैठी है तो सुचो ने कौन Soni ji, please mute yourself. Yes. Yes. Sit down at the computer or with a pen and a journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. अब आपके Thank- पास जो लिस्ट बनी हुई है ना माय डियर, ये उसमें से आपको निकाल के आनी है. If your list is already ready, you have to get these top 10 desires from that list. And then you have to think as though you have received them. How? This is what they're going to tell you. Thank you, thank you, thank you for dash and fill that blank with the desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Yes. So you have to ensure there from the very beginning. That day also in my first class, I told you, if you will just say, I am so thankful to you, I am so grateful to whosoever, that is half a sentence. You have to say what, like for whom and for what, to whom and for what. That is very important. Like you see here, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results. Reason. And then what is that? Why are you doing that? Because it will get you into your exact college you want. Yes, yeah. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show that I'm all clear and healthy again. यहाँ पर मैं एक चीज बोलने चाहूंगी. Like very interesting, mostly I hear people, when we go for our checkup, और जैसे ये जनरल अपन करवाते हैं, blood test करा लेते हैं, urine test कराते हैं, and then, when the people, they get their reports and then there is nothing wrong, they've absolutely, everything is clear. And then they, the way they say, कुछ निकला ही नहीं. भाई क्यों निकालना चाहते हो? डायबिटीज चाहिए, blood pressure चाहिए. So, I mean, the people, they are not happy that I don't have anything. They are sad, kuch nikla hi nahi. I mean, how can we do that? Isn't it? So one should be very happy. Oh, great. I don't have any problem. Yeah. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for doubling our sales figure this month. आपको Thank समझ you. में आया ये कैसे कर रहे हैं हम? इनकी जो ग्रेटिट्यूड लिस्ट है, इसमें ऑलरेडी इन्होंने यूरोपियन ट्रिप सोच रखी है. इन्होंने अपनी जो विशेस है, इनकी जो लिस्ट है डिजायर्स की, उसमें ये जाना चाहते हैं यूरोप ट्रिप पे. सो नाउ इसीलिए, बट उसमें बहुत पैसा चाहिए. सो अब उसको प्रायोरिटाइज करके, दिस इज हाउ, क्योंकि जब तक अपने को करना क्या है, जो चीज हुई नहीं है उसके पहले ही हमको थैंक यू बोले, राइट? अभी यूरोप ट्रिप पे जाना चाहते हैं अब, तो इसीलिए ये थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द अनएक्सपेक्टेड मनी आई रिसीव, which is the exact amount I needed for my European trip. जैसे ये चाहते हैं कि इनकी सेल्स बढ़े, इनका बिजनेस बढ़े. So thank you for the doubling of our sales figure this month. ये ऑलरेडी इनकी विश थी. अब उस लिस्ट में से ही निकाल के ये 10 इस तरह से लिख रहे हैं, और ये प्रायोरिटाइज्ड है. पहली क्या है इनकी? पहली इनकी देखिए, प्रायोरिटाइज करा है इन्होंने. पहले तो इनको हाई मार्क्स के लिए है, या ऐसे करके इन्होंने अपने हिसाब से करा हुआ है. दिस इज हाउ दे हैव डन इट. ये पहले क्या चाहिए? सो वी हैव आल्सो टू डू दिस वे. यस डियर. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Right?
Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of a new creation in the universe. Yes, dear. We do in Reiki also, we do anything we have to say, we do it 3 times. Everywhere it is like that because it is a number which is for the creation, right? So now, as I tell you, yesterday also I was talking to you when you're writing your count your blessings and then you're supposed to write 3 times. Why do we do that? आप सिर्फ लिख के छोड़ देंगे ना, I am so grateful to Beenal for helping me reading the book in the session. इतना मैंने लिख लिया, अब मुझे आगे क्या मिस कर दिया मैंने? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. इसके बाद मेरी यहाँ से एनर्जी चेंज हो गई. वहां तक मेरी एनर्जी दूसरी थी. आप करके देखिएगा, ना समझ में आए तो बंद कर दीजिएगा, करके देखिएगा. आप जब ऐसा करते हैं ना, जब आपने सिर्फ लिख दिया तब पढ़िएगा और फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके फिर पढ़िएगा और तब सोचिएगा हाउ डू यू फील. दिस लॉट ऑफ डिफरेंस. मुझे अभी महसूस है जब मैंने ये एग्जाम्पल दिया. देन ऑल्सो आई फेल्ट, वहां तक छोड़ने के बाद मैंने से थैंक यू, तो माई हार्ट एंड माई माइंड एंड माई हार्ट दे सिंग. अदरवाइज ये जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है ये फिजल आउट हो जाती है, निकल जाती है. जिस पर्पज से हम कर रहे हैं वो अपन को नहीं मिल पाता है, राइट? ओके. कितना ब्यूटीफुली मैम आपने एक्सप्लेन किया, सीधा जहन में उतर गया कि क्यों करना है, कैसे करना है. रियली आई एम सुपर सुपर थैंकफुल टू यू. आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total 3 completing a new creation. The same rule applies. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your own desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using magic number of creation and a secret magic formula. Wonderful. The second step of make your all wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day. Today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination, mentally answer the following question as though you have received your desire. First, what emotions did you feel when you received your desire? Second, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Third, what is the great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Okay. Umeshi, are you there? Yes, miss. You want Audi, I remember. Yes. Yes, miss. Now, what emotion would come to you? Would you feel when you will receive your desire of getting an Audi? A huge smile or a happinessly tears in my eyes. Okay, wonderful. अभी भी सोचना, हाँ, अभी तो मैंने आपको unexpectedly पूछ लिया. See, this is what happened. This is what will happen when your desire will come true. You would not know, hi, how do I react? Right? That is why she is giving us practice. What emotion did you feel when you received your desire? Beenal, आपको लगा कि इनको ऑडी मिली है? Yes, yes, yes. Very good. Yes, sir. मुझे ऐसा ही लगा मैं शोरूम में हूँ and I am bending on my knees and दोनों हाथ खुले रख के यूनिवर्स को थैंक यू कह रहा हूँ. You Very did it. good. Very good. Acha, who was the first person you told when you received your desire? And how did you tell them? Obey, sir. Of course, my wife. Your wife. Very good.
And how did you tell them? And how did you tell her? Video See, you call know- करके, see, this is the key and where I am standing. Okay, wonderful. मतलब आप guess करोगे मैं कहाँ हूँ? ये क्या जी। है? Right, sir? जी। Wonderful, wonderful. That question, sir. Yes. What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Now understood, all of you must have understood, this process has two parts. First, you have written all the 10 desires according to your priority, and then revisiting every desire, you have to answer these 3 questions. You see, this is how you will learn, this is how we will learn to imagine. Otherwise, सब पर same reaction आ जाएगा. So unless and until my imagination is very strong and powerful, how else would I attract? Right? Okay. मैम ये थर्ड क्वेश्चन मतलब as much as details मतलब समझा नहीं What कैसे is the first great thing you did when you received your desire? For example, let me take Umesh sir's desire. When he receives his Audi, what is the first great thing he would do when he would receive his desire? For example, he might love to go take the car to the temple, or he would like to take it to his parents, right? Or he would take a picture and then put it somewhere. So you can write as many things as you want. What would that first great thing you will do when you will receive that desire? When your child, or you want your child to go to Harvard University, and you receive the news. Oh, after such a long, after so many students are going, after all, so many students are going to apply for it, right? It's not only my child would be there. So if my child gets through, how would I feel? And what is the first great thing you will do when you will receive that desire? Celebrate with the family like that. Celebrate the family. You would go down and bow down in front of your Almighty. You would be so grateful that you would have tears in your eyes. And all your heart and soul, you would thank the God. Anything is possible, right? Depending like what all can come, what all would come in your mind. And we all would do it in a very different way. Isn't it? Yeah. Yes, yes. Finally, reread each desire and really emphasize the magic word thank you so that you feel them as much as you can. Move on the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. 10 मिनट में 10 डिजायर फुलफिल हो रही है तो यार देखो ये बहुत सस्ता सौदा है. Yes. If you want to do something that's really powerful and lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desire. Cut out the pictures and attach them to a board. That's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in a big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continual your continual gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Yes, this vision board or magic board, you can do it on anything. If you want to cut pictures, whatever your desires are, you can cut the picture or put it on your refrigerator. Or you can take a cardboard, you can just do it. You can just create virtually also. But I am a person, I would like to see it very often. Kaate, jaate, mujhe dikh rahe hain, right? So what you can do is, now why are they asking us to involve our children? My dear friends, whosoever is there on the call today, we are 18 of us.
And I'm sure we all are of different age group, right? Now just imagine when we are learning this at this age and what impact it's going to have, what difference it's going to make in our lives. So when we teach all these things to our children, मुझे लगता है इससे बेहतर गिफ्ट हम अपने बच्चे को, इससे बेहतर लाइफस्टाइल अपने बच्चे को और अ वे ऑफ लाइफ हम नहीं दे सकते. हम हमारे बच्चे को ग्रैटिट्यूड सिखा रहे हैं इसके थ्रू, which is awesome. आप उसको बच्चे को इससे बढ़िया चीज अपन अपने बच्चे को कुछ नहीं दे सकते. So at such a young age when the child will get it, but you know how will you involve? आप बच्चे को बोलोगे gratitude करो, ये करो, तो half of the time you see the maturity is not there. Yes, it will gradually come when we do it. You see, we parents or we elders in the family are role models. अपने बच्चे वो सब चीज करते हैं जो हम करते हैं. Knowingly, unknowingly आपको जरूर दिखेंगी वो सारी चीजें जो आप करते हैं, आपके बच्चे वही करते हैं. आपको कैसे पता चलता है कि इसके पापा गाली देते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि इसकी मम्मी ये चीज करती है? वो बच्चा करता है सब चीज, अच्छी बुरी आप उसको छोड़ दीजिए, right? So when we are role models, when we do this gratitude every day, ये जो इतने सारे प्रोसेस हम जो सीख रहे हैं, जब हम ये रोज करेंगे, आपको लगता है आपको बच्चे को बिठा के सिखाना पड़ेगा कि ऐसे करना है? बिल्कुल भी नहीं. कब उनकी लाइफ में ये सारी चीजें इनकलकेट कर लेंगे वो अपनी लाइफ में, आपको पता ही नहीं चलेगा. So this is a very good opportunity to involve our children in doing this thing. So they also know it's just not only painting, it is just not artwork. It is something more than that. Simplified version में आपने learning करा दी बच्चे की. Okay. Yes, my dear. Yes, sir. Magic practice number 13. Make your all wishes come true. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessings as you can. Sit down at a computer or with a pen or a journal and list your top 10 blessings, top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Use your imagination. Answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Second, who was the first person you told when you received your desire? And how did you tell them? Third, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Fourth, reread the sentence listing your desire and really emphasize that magic words thank you so that you feel them as much as you can. Fifth, if you like, create a magic board. Cut out the pictures and attach them to the magic board and put them in the place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in the big bold letters across the top. Sixth, just before you go to sleep tonight, hold that magic rock in one hand and say the magic words. Thank you, thank you, thank you for the best thing that happened during the day. Wonderful. Thank you so much, Beenal, for reading it so well. I really enjoyed your reading today. Thank you so much, my dear. Thank you so much, Ruchi ma'am, for explaining it so beautifully, so nicely that सारी चीजें already अंदर चली गई. इतनी अच्छी से मैंने शायद कभी समझा ही नहीं था इस चीज को जिस तरह से आपने समझाया. I'm Thank you so immensely much. thankful and grateful to you. So grateful to you, my dear. She was Wonderful, reading with the absolutely. feeling. Ha. She was reading with a feeling. Yes, sir. Yes. No doubt about that. No doubt about that. Any question, dear friends, for this practice?
This is a beautiful tool if you really, हाँ जिसके पास desires नहीं है तो उसके लिए तो boring है. जिसके पास desires है उसके लिए तो बहुत काम है. जमान उमेश सर क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं वीडियो चालू करना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों. हुआ है, चालू है ऑलरेडी उमेश अच्छा, जी. चालू है. Can you see हाँ. this then on the Yes screen? sir. हाँ. Yes. ये रखा है नोट पे स्टिक करके. Very एंड good जैसे sir. आपने खाली, मैंने वो नहीं लिखा है 5 लाख का, मुझे एक 0 ऐड करना है उसमें. Wonderful. Because it is I need that 50 lakhs for the fees of my daughter's study, for the study for masters. Wonderful. So I am asking universe, they do, so as you have written, now today also I will write that Yes. amount so that it is his lookout कि भाई कहाँ से देना, कैसे देना. Yeah. Absolutely. Absolutely. You see, sir, when I wrote this, you see, क्या होता है? I can always ask my husband to, if I want, right? But then I wanted कि मेरी account में है, मेरे पास है, right? Wonderful. Very nice. मैम मुझे इसका एक एग्जांपल अगर एक फोटो के जरिए या कैसे अगर ग्रुप में डाला जाए या फिर मुझे पर्सनली भेजा जाए तो इट वुड बी रियली ग्रेट. We'll do that. किस चीज का कह रहे हैं आप? इसका? मनी का. हाँ, एंड we'll do that. We'll do that. मैं और एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. ऑलरेडी मैंने हरीश जी को अभी जस्ट मैंने व्हाट्सएप किया है. हरीश जी, एक सरप्राइज है आपके लिए. व्हाट्सएप देखना जरा. आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन जस्ट अ सेकेंड. अगर चले तो एक 2 मिनट मिनट मैं टाइम लिखता है. हूँ. ओके. यस मैम, मैं जस्ट एक ग्रुप के साथ शेयर करना चाहती हूँ इफ यू अलाउ टू. Yeah, please. हरीश Yes, जी why allow. not? Carry on, my dear. Yes. Just a second. I hope my screen is visible. Yes. Yeah. Yes, Yes. it's visible. So, this is my second international trip, London Wow. trip, and I was manifesting it long ago कि मुझे Uh-huh. जाना है, and with Harish sir and everyone मैंने ये manifest किया, and yes, finally I'm going. And the best thing is I'm going this October 23. ये मुझे ये साल में ही जाना था. So this happened all because of वो manifestation, visualization, and truly Wonderful. believing in the things. Wonderful. You see, so whatever the desire is, the universe is there, right? So we rightly say, देखो universe आपका manager है भाई. बोलना तो आपको पड़ेगा आपका manager से क्या चाहते हो आप, right? Yes. Wonderful. Great, my dear. Thank you so much, everyone. It means a lot. Great. Wonderful. Somebody would like to share something? किसी को कुछ share करना है? दिव्या असनारी, थैंक यू सो दिव्या मच. जी, thank you so much, dear. Thank you so much. या Thank you. मैम एक मेरा एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था. Oh, wow. Actually, I'm in sales. I'm a Ah. product manager. Hmm. So throughout, we have quarterly targets. So Okay. from the day one, I just was having in my mind that I've already achieved my sales target, quarterly sales target, and before 2 days only, I achieved my targets. So क्या just बात है. because of that, and even I'm achieving more. Wonderful. Wow. Yeah. Wow. Yeah, so that's the Congratulations. gratitude, effect of gratitude. Yeah, Congratulations, my dear. thank you. Yes, many more things coming. Great. Anybody else? Anybody who's come for the first time? Soni ji? Soni ji? Yes, आप- ma'am. This is the आप कुछ कह- first time I'm attending this हाँ जी, lecture, and I'm really feeling grateful, and I learned a lot of things from you from this lecture. I'm Great. really thank you, and thank you. Thank you for coming, my dear. Great. Yes. Thank you so much for coming.
Anybody else? Any question regarding today's practice? मैम एक चीज पूछना चाहती थी मैम। रिसेंटली एक मेरा एक दोस्त है, यूएस में रहता है। तो ही हैज लॉस्ट हिज जॉब ले ऑफ की वजह से, तो रिसेंटली। तो मैं उसे ये चीज बताना चाहती हूँ करने के लिए। अभी कैसा है ना, ही इज हैविंग ओनली 40-45 days टू लीव इन यूएस, एल्स उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसको मैं Yes. किस तरह से हेल्प करूं, बता पाऊं, जिसमें उसके जहन में भी उतरे और वो स्टार्ट भी करे, अगर इन अ सिंपलेस्ट वे कर पाऊं तो। इसका सबसे पहला तो है मैम कि उसके पास अभी he has something to be grateful for. As you see, आगे चल के you will read also, like tough times or when the time is not good would give us, the value of what was good in our life. Right? So now whatever is there in his life, he has to be grateful for that. And then he can think about like whatever job he wants. He has to think and then visualize that and be जो आज की exercise है वो perfect है मैम। कैसा आप है ना, उसको- अभी नेगेटिव चीजें ऑलरेडी घुस चुकी है एंड वो उसको मानने को ही रेडी नहीं है। तो उस केस में आप पहले तो उनसे यही कहिए कि आप पहले तो आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा है उसको देख लीजिए, और एक हफ्ते के लिए रोज क्या अच्छा हो रहा है 5 चीज लिख लीजिए, 3 चीज लिख लीजिए। whatever good is happening every day. You see, every day is a different day, right? So when he will write every night before he sleeps what was good today in his life, and if he's ready to do the magic rock and all those things, I don't know how open he is to do that. So all those things, but to begin with, just asking whatever is good in your life, why are you doing that? Whatever is good in his life, because when we are able to notice that in spite of all the bad or whatever ugly or whatever is not happy is there in my life, apart from that, there are many things which are very good in my life. So जब हमें वो वाली चीज देखने को आ जाएगी तो उसका माइंडसेट चेंज होने लगेगा, वरना अभी उसके वो नेगेटिव माइंडसेट में आप उसको वो डालने में, उस नेगेटिव से आप इधर कैसे लाएंगे, समझे? तो उस शिफ्ट को इधर करना तो पड़ेगा. सो दिस इज वन स्टेप टू शिफ्ट, एंड देन उसके बाद आप just ask him to write 3 things every day before he sleeps. What was good, what good thing happened today, not to evaluate and कि आज ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा था. हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे सिर्फ 3 अच्छी चीजें लिखे हो जो आपके लाइफ में आज हुई. ऐसे करके आप उसको थोड़े दिन रोज लिखाइए, हफ्ते भर के बाद उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा. You yourself will be surprised कि एक हफ्ते में उसमें कितने चेंजेस है. Definitely, I'll give a try. 200. Yeah, we all pray Thank that you so much, it ma'am. happens. Good for him. Yeah, you're welcome, my dear. Anything else anybody would like to share? Any question? अभी तो ज्यादातर लोगों को पता है क्या करना है मुझे, पर कल आके मुझे बताना भाई, आप लोग कल की आज की प्रैक्टिस आपने करी कि नहीं करी? कल वाली कितने लोगों ने करी थी? How many of us did that? 3 people who made lot of change in your life. जिसने पेरेंट्स को नहीं डालना है, सबके पेरेंट्स करते हैं. आप पेरेंट हो तो आप भी अपने बच्चे के लिए खूब करते हो. We are not talking about parents. If you have done it, you have remembered that person, आपने उस इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड किया, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग और आएंगे. Wonderful, Shirin ma'am. Good. Keep it up, my dear. Any question, Shirin ji? Any sharing? क्या आप बता रहे हो कि आपने किया? Yeah, ma'am. Hi. Good evening. Very good evening, my dear. Ma'am, I tried to do that actually throughout the day because I found it very powerful. Yes. And try to remember as many mentors as possible. Very good. To the extent that I even think my mentor to me. Some सबसे easy. Good. Wonderful. So at the end of the day, how did you feel? So what happened, ma'am, was that my son is actually a teenager. उसका engineering का
एडमिशंस चालू है. सो इट्स अ गवर्नमेंट प्रोसेस, ऑनलाइन है. और वहां पे क्या हो रहा था दैट आई वाज गेटिंग वेरी वरीड बिकॉज हमारे पास 2 ऑप्शंस थे. एक उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है डॉक्यूमेंट्स का और एक ई वेरिफिकेशन करवाना था. So I was still feeling inside my heart कि मुझे पता नहीं ई वेरिफिकेशन कब होगा कब नहीं, and I wanted guidance. I was desperate for finding the right path. और मैं बहुत उसके लिए मैं upset थी, and I don't know maybe this practice today helped me because क्या हुआ that around 7 o'clock I received a message saying कि जो ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ना वही उन्होंने कैंसिल कर दिया है. And now the only way to go ahead is by physical verification. So it came and I got it at the exact time. मतलब मैंने message देखा and I was able to book a slot for my physical verification because अगर सब कुछ अब पता चल जाएगा फिर सब slots पूरे book हो जाएंगे और it would have been difficult. So I don't know, it was like the guidance came at the right time. There was no rush. I got a slot and now I have to go tomorrow and get the verification done. Wonderful. You see, you did not get into the doubt कि कैसे होगा क्या होगा, right? Leave it. Leave it on the universe. Just go for it. Great, my dear. Very nice. Thank you. Very nice. Thanks to you because yesterday you spoke so well about it. Thank you. Thank you so much, dear. So, dear friends, shall we all end here? Any question? Mataji. I have a question. So, recently I visited an office, okay, and they came up with on their own, they came up with a proposal and they told me, oh, no, this is what I went for something else and this, they themselves said, no, we want somebody like you to come and do some, motivation and a lot of other stuff with their ladies. So, I have not approached them till now for the same thing. But how do I write? Because nothing has happened yet. It's only he has just mentioned it. And he seemed pretty serious about it that yes, it needs to be done. When, what, where, how, we have not decided. So let's say it is something I want to do. So how do I write it so it manifests for me? See, I don't have the detail of what it is. So now you have been there. It is the detail you have got it, like what all is there. And if it suits you, if you really want, just write about today's practice is just perfect to do that. But लिखना आपको ये रहेगा कि वो क्या चीज के बारे में आपको बोले हैं और वो आपको कितनी पसंद है कि आपको वो करनी है, right, my dear? तो बस उसको आप उसमें से आप उसको visualize करिए that you have already got it. This is what you are doing it. ये सब आप कर रहे हो वहां पर बैठ के. तो आप जितना imagination आपका जितना let your imagination run wild, जितना आप कर सकते हो, and this will manifest. So I can even imagine that, okay, we have started getting results and okay. And you be in gratitude as well. See, today I told you, आपके लिए खजाने का दरवाजा खुला है आज कि आपको वो वाली चीजों का gratitude कर सकते हैं जो अभी नहीं हुई है. वरना अब तक हम लिखते थे जो चीज हो गई है उसकी करते थे. But the only condition or only the thing you have to be very careful is that you are able to imagine that. You have got not only imagination, you're feeling also. Like Madhuji, suppose if you get this opportunity, how would you feel? Right? So let everything happen together. And then you be in that situation and feel, how would you feel if you get this opportunity? Okay. Yes, my dear. Thank you so much. You're welcome, my dear. You're welcome. Chale. Anybody else? कुछ कहना है? Chale. So my dear Just want to say lots of thanks to you, Rishi ma'am, and very nicely explained as and it just gets. I think now you really feel like doing that exercise when you all explain it so well. Nice, great. Very encouraging to go ahead and do the exercise. Wonderful. And the more we do it, the more we get very close to what we want in our life. You see, we are at a very different platform when we do it. Great. True. Wonderful, my dear. All the blessings to you all. Thank you so much. Chale.
So, Thank dear you, ma'am. friends, Bye. Good बहुत night. अच्छे से you have vibrated, energy बहुत अच्छी थी. This was the first session I attended and I'm feeling that energy inside me. Thank you so Wonderful. much for this wonderful session. Thank you, Harish ji, for Thank you, this thank you, opportunity. thank you, everybody. Thank you. so dear friends, thank you so Miss- much. Yes, sir. मिस बस ऑडी लेके राजस्थान आ सकते हैं ना? Oh, sir. मेरे को भी चक्कर लगवाएंगे. श्योर मिस. Even I would love to. उमेश जी आप किधर रहते हैं? बॉम्बे में? नहीं केन्या. रहता बॉम्बे में हूँ, लेकिन अभी राइट नाउ आई एम इन नायरोबी, केनिया. नो बट आप जब आउडी लेके आएंगे तो आप बॉम्बे से राजस्थान जाएंगे ना? जी मिस. हाँ तो प्लीज अंकलेश्वर में रुक जाइए गुजरात में आप. हाँ मैं आपके साथ डेफिनेटली मिस. ये चलेगी Definitely. आपके साथ. आपको Very चाहिए तो good. मैं Yeah. ड्राइव भी कर लूंगी आपके लिए. I'll help you to drive also. जी श्योर मिस. Wonderful, wonderful. That was so ओ ऑडी great. देगा नहीं किसी को चलाने को. Now मधु we'll मैन, manifest the road trip in Audi. मधु मैडम वो देगा नहीं definitely, we किसी all को do चलाने it. को ऑडी. So thank you so much, all of you, for being there with me. I'll see you again on Wednesday. Next Wednesday, I'll be Thank there you. with you all Bye. again. Thank you so Thank much. Bye-bye. Thank you Bye. miss. Thank you miss. Thank you, thank you.